Hello students, hope you all are doing good. So here I Gargi Kamar, Assistant Professor BBA in St. Andrews Institute of Technology and Management. Bhopal. So guys, here I'm back with an online lecture series on BRM subject. So let's start with lecture. So in today's lecture, we are going to cover some more topics from 4th unit, and we are going to cover nature and types of descriptive analysis, univariate and bivariate tests of statistical significance. So we have already discussed what is the descriptive analysis. So today we will see the nature and types of descriptive analysis. Okay. So let's move on. So what is descriptive analysis? Descriptive analysis summarizes the population data by describing what was observed in the sample numerically or graphically. So descriptive analysis is basically that analysis of that process in which you summarize the data which you observe in numerical terms and you present that data numerically or graphically. Okay. The analysis of variable may be treated one at a time, two at a time, or more than two at a time. So you can analysis variables, one variable at a time, or two variable, or more than two variable at a time. This enables a distinction to be made between. There is three kind of analysis which we use in descriptive analysis. First is univariate analysis, second is bivariate analysis, and third is multivariate analysis. We will discuss these three analyses in detail later on. First, we will discuss the nature of descriptive analysis. So, see, there are some points in nature and descriptive analysis. First is summarizing from large numbers of respondents to simple statistics. So, descriptive analysis do summarize the large number of respondents to simple statistics. Okay, so descriptive analysis में हम large number of data को small और simple language में summarize करते हैं. Okay, simple but powerful. We will describe or we will summarize these data in simple form, in numerical form, and in graphical form. Okay, when you describe your data in numerical form and in graphical form, then it is easy to understand. Okay, so you made simple these data which you collected, and these data are although these data are simple, but these are very powerful data which you use in descriptive analysis. Okay, so आप descriptive analysis के थ्रू जो भी डेटा आप रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी डेटा आप ग्राफ के थ्रू या न्यूमेरिकल टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ऑल दो सिंपल होगा पर पावरफुल होगा. यूज ऑफ यूनिवेरिएट स्टैटिकल एनालिसिस इज वेरी सिंपल. Third is provide simple summarize. So through descriptive analysis, you provide a simple summarization. So जब भी आपको कोई भी डेटा का summarization numerical form में होगा या chart form में होगा या graph form में होगा, then it is easy to understand. That's why we can say that the descriptive analysis provides simple summarization. Okay. To see why it is simple, easy quantitative summaries are provided in form of statistical or visuals. So आपको statistics में अगर provide करोगे, visualization में आपको data provide करवाया जाए, तो it is easy to understand for every person. Okay, that's why we can say descriptive analysis is simple summarization of data. Then helps in understanding quantitative data. So, help in understanding quantitative data. Descriptive statistics help to set the stage of understanding the quantitative research evidence. So, I have already told you कि जब भी कोई data आपको quantitative form में given होगा, तो this is easy to understand for you or for every person. Okay, आप compare भी कर सकोगे उसको, अगर वो numerical term में given होगा, quantitative term में given होगा, तो you can easily compare these data from another. Okay, और आप comparative conclusion आप उसका निकाल सकते हो when your data is in quantitative form. So it helps in understanding the quantitative data. The next is elementary transformation of data. Descriptive analysis is the elementary transformation of data in a way that describes the basic characteristics such as central tendency distribution and the variability. So these are the elementary transformation of data. These are the elements through which you transform the data, that is central tendency, distribution, and variability. The next is describes attributes. Descriptive analysis is used to describe the attributes of a system. So what is the attributes of a data or of a system? Then
descriptive analysis also describes the attributes of that data or that particular system. Then correlate attributes to the final system. So I have already told you, जब भी आपको कोई डेटा गिवन होगा और आप उसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में लिखेंगे, कोई भी डेटा को अगर आप क्वांटिटेटिव फॉर्म में एनालिसिस करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो इट्स इजी टू correlate or it is easy to correlate that data from others. Okay, so that's why the correlate the data, correlate the attribute to the final system is easy task in the descriptive analysis because this is present in graphs or in the numerical term. So with the help of magnitude estimation, descriptive analysis can be used to correlate each of the attributes selective contribution to the final system. Then use for large scale study. A typical use of descriptive analysis is to produce a situational analysis which usually consists of national or subnational level information such as land size, population income, health, experience, illness, malnutrition, morality, excess of safe water, and sanitation. So, sanitation, sorry. So, use large scale of study. That means जब आपको wide level पे पूरे population level पे पूरे world wide level पे कोई अगर data का study करना है, analysis करना है, then you can use this kind of descriptive analysis so that you can easily access the data. You can easily understand the data which is given in numerical term or in graphical form. Okay? So these are the basic natures, or you can say that these are the features of the descriptive analysis. Okay. Now we will discuss the types of descriptive analysis or techniques which use in the descriptive analysis: univariate, bivariate, and multivariate. But these two analysis is only relevant for your syllabus. Multivariate analysis is not in your syllabus. Okay. So we will discuss these two type of analysis only. So first is, let's discuss the types or techniques of the descriptive analysis. First is univariate analysis. It examines the effect of the independent variables on a single dependent variable. So, if you want to test the effect of single independent variable on a dependent variable, or you want to know the effect of various independent variable on a single dependent variable, then you will use these kind of analysis, that is called univariate analysis. जब आप बहुत सारे independent variable, एक single variable independent variable, एक single dependent variable, but that means dependent variable आपका single होना चाहिए. तो आप किसी भी independent variable का single dependent variable पे impact देखना चाहते हैं, impact देखना चाहते हैं, that will be called univariate analysis. So, for example, a doctor wants to know the effectiveness of a drug. He formed two groups for his study. Group A, experimental group, is given the dose of drug, and Group B, control group. So, एक डॉक्टर है जो एक ड्रग है, एक मेडिसिन है, एक ड्रग है, उसका इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, इफेक्टिवनेस को एग्जामिन करना चाहते हैं. उसके लिए उसने पूरी पॉपुलेशन को दो ग्रुप में डिवाइड किया. उसने दो ग्रुप में पॉपुलेशन को डिवाइड किया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. ग्रुप ए होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा. ग्रुप बी होगा कंट्रोल ग्रुप, जिससे हम एनालिसिस करेंगे, जिससे हम कंपेयर करेंगे. सो ग्रुप ए का जो भी मेंबर्स होंगे उनको वो डोज दी जाएगी, ड्रग का डोज दिया जाएगा, और ग्रुप बी को ड्रग का डोज नहीं दिया जाएगा. उसके बाद एक्सपीरियंस किया जाएगा कि एक ग्रुप ए पे जो इम्पैक्ट पड़ा उसका ग्रुप बी के लोगों से कंपैरिजन किया जाएगा कि ड्रग देने से क्या इफेक्ट हुआ ग्रुप ए के लोगों पे. सो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में आपने डिवाइड कर दिया. ग्रुप बी कंट्रोल ग्रुप इज नॉट गिवन एनी ड्रग. द डॉक्टर मेजर्स द डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज ब्लड शुगर, heart rate, etc. for both the group, which univariate analysis. तो इनकी एनालिसिस करने के लिए रिसर्चर ने क्या किया, डॉक्टर ने क्या किया, एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज शुगर, हार्ट रेट. डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ये जो हार्ट रेट, शुगर, ये किस पे डिपेंड करते हैं, आपके ड्रग पे, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. फॉर बोथ ग्रुप with univariate analysis we will get to know whether the drug work or, तो हमको पता चलेगा कि ये ड्रग वर्क कर रहे हैं, जो जैसा हम डिजायर वर्क चाहते हैं उस अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. ओके. देन सेकंड इज bivariate analysis. Bivariate studies measures the relationship between the variables. None of the variable is independent. Both the variables are correlated to each other. तो
in univariate analysis, when we will use a univariate analysis, when we want to know the fact of the independent variable on dependent on a single dependent variable, that time we will use univariate analysis. And when we will use bivariate analysis, for bivariate analysis we will use these kind of analysis when we want to know the relationship between two variables. Okay, if you want to know the relationship between two variables, none of them is independent or dependent, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, दो वेरिएबल है जो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई भी उनमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, then we will use bivariate analysis. Both the variable are correlated to one another. For example, one want to know how family income influence graduation rates. So आपकी family income कैसे influence होती है graduation rates से. Then the scale of ice cream and the temperature of a particular day. So next example is कि पर्टिकुलर डेज में आपके आइसक्रीम और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है. ओके, then in that kind of cases you will use the bivariate analysis. The next is multivariate analysis. Multivariate analysis is the set of the techniques used for analysis of data set that contains more than one variable, and the techniques are especially valuable when working with the correlated variables. So in this analysis, you will use that kind of analysis when you have more than two variables. Okay, दो से ज़्यादा variable या number of variables आपके पास होंगे, large number of variable होंगे, then you will use multivariate analysis. So these three kind of analysis is there in descriptive analysis. These three kind of techniques. Now, univariate analysis for univariate analysis करने के लिए we have different kind of statistical technique. For bivariate also we have different kind of statistical techniques. So first we will discuss univariate statistical techniques. So univariate statistical techniques, the first univariate statistical techniques is measures of central tendency. To measure the central tendency, we have five kind of techniques. First is mean. The mean is the arithmetic average calculating. The mean is very simple. You just added all the values and divide by number of observation in your data set. तो आपके जितने भी डेटा होंगे, जो जितने भी नंबर होंगे, उनको आप सबको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेटा से, नंबर ऑफ नंबर्स से. कितने नंबर्स हैं आपके पास, कितने आइटम्स हैं. So you will add all the items in your data, in your observation, and will divide this amount by number of items. Okay. So this will be called, this will also known as arithmetic mean, or you can say mean. Okay. Second central tendency measure is median. So mean mean को आप क्यों यूज करते हैं, जब आपको एवरेज किसी का निकालना हो, जब आपको गिवन आइटम्स का एवरेज निकालना हो, then you will use median. Then median आप मोस्ट मिडिल वैल्यू के लिए आप यूज करेंगे कि मिडिल वैल्यू कौन सी है. You want to know the middle value from various items, various numerical terms, then you will use median. So the median is the middle value. It is the value that splits the data set in half. Okay, in half. To find the median, order your data from smallest to largest, and then find the data point that has equal amount of values above it and below it. So median में आपको मिडिल मोस्ट वैल्यू देखनी है. मोस्ट मिडिल वैल्यू कौन सी, मिडिल में कौन सी है जो आपके पूरे डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करे, जो आपकी सारी आइटम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है. ओके, सो मोस्ट मिडिल वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी जो भी डेटा होंगे उनको आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट फॉर्म में अरेंज करेंगे. सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद दूसरा, तीसरा चौथा, दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में आप उसको अरेंज करेंगे सारे नंबर्स को, और सबसे बीच में जो आपकी पूरी सीरीज को वो इक्वल नंबर में डिवाइड करेगा. दैट वैल्यू विल बी योर मीडियन. ओके, सो फॉर दैट फॉर्मूला इज, आई विल शो यू. फॉर्मूला इज इफ द केस इज ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज. अगर आपके पास जितने भी केसेस है वो ऑड नंबर है, आपके 5 केसेस है, दैट मींस दैट इज एन ऑड नंबर. देन व्हाट विल यू डू, n plus 1 upon 2 plus 2 आइटम, दैट मींस n plus 1 5 plus 1 divided by 2, मतलब थर्ड आइटम. थर्ड नंबर पे जो भी आइटम होगा दैट विल बी योर मीडियन. When the case even number में आपके केसेस, सपोज आपके केसेस है सिचुएशन आपके पास 6, दैट मींस इवन नंबर पे, तो व्हाट विल यू डू, 6 divided by 2 आइटम, दैट मींस 6 divided by 2. Okay, then what will you do, you will do the average of n plus 2 item plus next item. n plus 2 करके जो आइटम आया उसको आप किससे डिवाइड करोगे,
second number. So let me rectify this. This formula will be n plus 1 plus 2 theta. Okay, the formula will be n plus 1 upon 2 theta. उस कंडीशन में क्या होगा? If you have 6 observation, then 6 plus 1 that is 3.5. So 6 plus 1 is 7 divided by 2 that is 3.5. So you will take the value which is on third number plus you will take the value which is on fourth number and you will average for that. That means you will divide these two terms by 2. Okay. So आप क्या करेंगे? जैसे 3.5 आया, थर्ड नंबर पे जो वैल्यूज को लेंगे प्लस फोर्थ नंबर पे जो वैल्यूज को लेंगे डिवाइडेड बाय 2. तो 4 और 7 डिवाइडेड बाय 2 इज 3.5. ओके. सो आप क्या करेंगे? जब ओड नंबर इवन नंबर होगा तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस अपॉन 1 n प्लस 1 अपॉन 2 आइटम और वो कुछ आपका पॉइंट्स में आएगा तो फिर आप क्या करोगे? n प्लस 2 पे जो आइटम है वो और उसके नेक्स्ट पे जो आइटम है वो दोनों आइटम्स आप लोगे और उनका क्या करोगे? एवरेज को करोगे डिवाइड से 2 डिवाइड करोगे उनको 2 से एंड द रिजल्टेंट वैल्यू विल बी योर. देन नेक्स्ट इज मोड. तो मोड में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? कौन सा इवेंट सबसे ज्यादा अकर हुआ है? दैट विल बी कॉल्ड मोड. सो सी द मोड इज द वैल्यू दैट अकर्स द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन योर डेटा. तो आपके जितना भी डेटा है, जो भी इवेंट्स आपके सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपका अकर हुआ है, दैट विल बी कॉल्ड योर मोड. इन योर डेटा सेट ऑन अ बार चार्ट, most frequently in your data set on a bar chart, that mode is the highest bar. If the data have multiple values, then you are find occurring the most frequently. You have the multimodal distribution. If no value records, then data do not have any. सो मोड में आप क्या करेंगे? आपको बहुत सारे आइटम्स गिवन है, जो नंबर आपको सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा दैट विल बी कॉल्ड योर मोड. ओके. और अगर आप बार चार्ट की बात करें तो आपके बार चार्ट में जो नंबर की वैल्यू सबसे ज्यादा, नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दैट विल बी कॉल्ड मोड. ओके. नाउ नेक्स्ट मेजरमेंट इज ज्योमेट्रिक मीन. It is a mean or an average which indicates the central tendency or the typical value of a set of numbers by using the product of their values. As the opposite of the arithmetic mean, which uses their sum, a geometric mean is defined as the root of the product on n number, that is for the set of numbers. The geometric mean is defined as. So what will be the formula of geometric mean? देखिए आपने mean में जनरली क्या किया? आपने average किया. इसमें आप क्या करेंगे? एवरेजेस का रूट करके, एवरेज ना करके जो भी वैल्यूज आपको गिवन है उसका रूट एन करेंगे. जबकि पहले आपने क्या किया था? डिवाइड बाय एन किया था. अब आप क्या करेंगे? रूट एन. लेट्स सपोज यू हैव वेरियस इंफॉर्मेशन, वेरियस नंबर्स लाइक a1 a2 a3 and so on. Then you will root a1 and a2 and number of items you will write here and you will calculate your answer. ओके. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है. आपको सिर्फ सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना है, a1 a2 and so on and root n. So numericals are not relevant for you. Okay. So in किसी भी फॉर्मूला के लिए आपको न्यूमेरिकल नहीं करना, that is not relevant for your syllabus. आपको सिर्फ ये फॉर्मूलाज देखने हैं, टेक्निक्स आपको बतानी है, डिस्क्राइब करनी है. Then last technique of univariate analysis is harmonic mean. So the harmonic mean can be expressed as the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of given set of observations. So harmonic mean आपको basically क्या होगा? Reciprocal of the arithmetic mean. So that the formula of harmonic mean will be n upon 1 upon x1, 1 upon x2 and so on. Suppose आपके पास 3 आइटम्स हैं, तो आप क्या फॉर्मूला क्या होगा? n upon 1 upon x1 plus 1 upon x2 and 1 upon x3 and so on. So if you have 3 arithmetic, okay, if you have 3 mean, then you will write 3, then upon 1 upon 2. Suppose you have 3 values 2, 3 and 4. Okay, then first number of things is 3, number of items is 3, so you will write 3 upon 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon 4. Okay, like this you will calculate your harmonic. Okay. So these are the techniques which you will use in the univariate and statistical analysis. Okay. So that's all for today's lecture. In next lecture we will discuss the statistical techniques of bivariate analysis. Okay. So that's all for today. Thank you guys.